Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, welcome, Pranam and hello, my name is Ravikant Sharma and welcome you all to my channel Soul Physics. Today's video is specially dedicated to 11th graders and yes, today we are going to start a new chapter and that is unit and measurement. So in a previous video, we had discussed what are the needs for studying a physics and what are the various ways for studying a physics. I had given you the approach for studying a physics. अगर आप वो approach को accept करते हो, अगर adopt करते हो, तो you will be a good researcher, maybe a future scientist. Depends on your intensity of studying the physics. Now the next part is a continuation part. In this chapter, we are going to understand that physics is not only limited to the observed quantity, but we need a measuring part so that observed quantity can be estimated. So without wasting a time, let's get started. Physics is not something which is limited with the observable phenomena, right? There are a new parameter which is obviously associated with the observed phenomena. For example, measurement. Right? So measurement is a new parameter which is associated with the observed phenomena. Why I am stating this? Because एक example लेके चलते हैं. अगर मान लो कि एक बॉल को मैंने तेजी से ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है? तो I had done a work on the body so that to the ball so that that ball had moved to the upward direction. अभी जैसे ही बॉल एक सपोज करो कि मेरे सरफेस से मतलब मेरे रेफरेंस से ऊपर की तरफ गया, ऑप्टिमम पोजीशन तक गया और वापस से वो जमीन की तरफ गिर रहा है. So it is falling toward the earth surface by a force of gravity and that is a natural phenomena. It is not only limited to a ball. अगर मान लो एक बॉल की जगह पे आप मार्कर भी फेंकते हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने हाथ में है, अगर आप उसको ड्रॉप भी करते हो तो it will be naturally falling onto the ground surface, right? So it is falling because of the influence of the gravity. Now all those things are natural. Now a moment ago I had stated that physics is not only limited to observed phenomena. नीचे गिरना बॉल का या फिर कोई बॉडी का, इट इज अ नेचुरल फिनोमिना. नाउ देयर आर न्यू थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू अटैच. अगर मैंने आपसे ये पूछा कि विथ व्हाट वेलोसिटी द बॉल हैड बीन थ्रोन, विथ व्हाट स्पीड, और लेट्स से हाउ मच डिस्टेंस दैट बॉल हैज कवर्ड ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी, और लेट्स से what will be the duration of ball from the starting point to the end point. अब यहाँ पे 3 न्यू पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया. अब क्वेश्चन होता है कि ये पैरामीटर्स को मेजर कैसे करें. सो दिस पैरामीटर विच आर एसोसिएटेड विथ द नेचुरल फिनोमिना is called physical quantity. So this thing you have to understand that physical quantity is something which can be measured. For example, like if you wanted to measure a distance, so distance is measured in meter. So basically distance is a length. Length is a physical quantity. If you wanted to measure a time, so time is another physical quantity. If you wanted to measure, let's say, a mass of the body, so this is another physical quantity. So all those things which are associated with the observable phenomena and which can be measured to complete the understanding of behavior of any individual body, and that is something what we call physical quantity. So anything that can be measured, those physical quantity which can be measured is called physical quantity, right? अब दूसरा क्वेश्चन क्या उठता है बेटा कि since we have understand the concept of physical quantity, what is measurement? Measurement is something in which you are comparing one physical quantity with a standard physical quantity or one body with a standard body. अभी मैंने ये बोला कि for example, like if I wanted to measure a mass of one marker, है ना, और let's say I have, ये basically ये example मैं क्लास में भी यही देता हूँ, बच्चे इजीली समझ लेते हैं. लेट्स से कि मार्कर को मैं एक स्टैंडर्ड बॉडी में मान के चलता हूँ, ठीक है. अब इस मास का जो भी मास होगा, इस मार्कर का जो भी मास होगा, दैट आई विल कंसीडर एज अ स्टैंडर्ड एंटिटी. तो अगर मैं ये पूछूं कि व्हाट विल बी द, लेट्स से ये मेरे पास एक क्लॉथ है, इससे मैं रब करता हूँ बोर्ड को. सो लेट्स से व्हाट विल बी द वेट ऑफ दिस क्लॉथ. तो अगर मैंने ये बोला कि लेट्स से आई हैव रिपीटेड 2 मार्कर्स और 3 मार्कर्स and the weight of 3 markers is equal to the weight of this cloth. So I will say that the mass
of this cloth is equals to 3 times the mass of this marker, right? So basically here, in order to measure the body or in order to measure any physical quantity, you need one standard physical quantity. In my case, I have used marker, right? So obviously this marker is not limited. Nowadays we have a standard devices, we have a standard object which has been kept at the museum in the France. वहां पे फ्रांस में एक म्यूजियम है जहां पे हर एक स्टैंडर्ड बॉडी को रखा गया है कि भाई टाइम का मेजरमेंट के लिए एक सेकेंड मतलब कितना होना चाहिए, 1 किलोग्राम मतलब कितना होना चाहिए, 1 मीटर मतलब कितना होना चाहिए. तो ये सारी एक स्टैंडर्ड बॉडी वहां पे उस म्यूजियम में रखा गया है, ठीक है. और ये जो मेजरमेंट है वो एक तरीके से सोसाइटी ने मिलके डिसाइड किया कि 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होना चाहिए, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम होना चाहिए, ठीक है. 1 सेकंड मतलब कितना ड्यूरेशन होना चाहिए. तो ये सारी चीजें जो है वो सोसाइटी ने यूनानिमसली डिसाइड किया हुआ है. सो बेसिकली मेजरमेंट इज नथिंग बट मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी with standard quantity, standard physical quantity. ठीक है. स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी अभी आई होप अभी ये क्लियर हो गया होगा बेटा. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज दैट since we are discussing unit and measurement, there is a now the second part that we are going to discuss is unit. So what is unit? So unit is helpful for distinguishing one physical quantity with another physical quantity. अगर मैंने यहाँ पे एक लिखा length लिखा, then मैंने यहाँ पे लिखा mass और यहाँ पे मैंने लिखा time. So this length can be distinguished with a unit called meter, mass can be distinguished with a unit called kilogram, and time can be distinguished with a unit called second. So mass, meter, kilogram and second are the units of the physical quantity and which will be essential for separating out a different physical quantities. ठीक है. अगर मैंने यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा 2 मीटर, 2 किलोग्राम और 2 सेकेंड, ठीक है बेटा. तो ये जो 3 वैल्यूज मैंने लिखी है, तो विथ द अगर मैंने खाली अगर एक न्यूमेरिकल वैल्यू रखा होता तो आई कैन नॉट से दैट व्हाट आई हैव मेजर्ड, राइट, अनलेस एंड अनटिल आई यूज सम यूनिट्स. अगर मैंने यहां पे मीटर अगर रखा है तो इसका मतलब मेरे पास रफ ये आइडिया मिल जाएगा दैट आई हैव मेजर्ड द लेंथ ऑफ द बॉडी. If I have written 2 kilogram, then I will estimate that I have measured a weight of the body. If I have written 2 second, that means I can state that I have measured a time of that particular body. तो ये सारी जो units का जो need है वो क्या है बेटा? To understand the difference between the physical quantity and to separate them and to estimate that which physical quantity we are using. Right, so this is the need of unit. So I hope ये measurement और physical quantity and unit का जो basic difference है वो clear हो गया होगा, right? अगर ये चीजें अगर आपकी clear हो गई होगी तो now I am going to state a new topic and that is fundamental quantities. So what is fundamental quantities? Fundamental quantities का भी बहुत जरूरत है. Because if I wanted to measure any quantity, as I told you, I need to assign certain unit with it. For example, like fundamental quantities. So basically, अगर मैं कोई बॉडी का स्पीड मुझे मेजर करना है, ठीक है, तो स्पीड आप कैसे लिखते हो? स्पीड इज जनरली डिफाइंड एज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम टी, है ना बेटा. स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम टी. और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बेटा? मीटर. और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड. स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाय वी. तो यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. तो अगर मैं अब यहां पे हमारे पास 3 फिजिकल क्वांटिटी है, स्पीड भी है. स्पीड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फिजिकल क्वांटिटीज. समझ में आ रहा है? स्पीड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फिजिकल क्वांटिटीज. तो मतलब अगर मुझे स्पीड का यूनिट अगर मुझे डिफाइन करना है तो स्पीड यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. अब यहां पे मैं
ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि अगर मेरे पास डिफरेंट और ज्यादा अगर फिजिकल क्वांटिटीज अगर मुझे मेजर करना है, फॉर एग्जांपल लाइक अगर एक्सेलरेशन अगर मुझे मेजर करना है, तो एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, सो दैट वुड बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मैं जितना ज्यादा मैं फिजिकल क्वांटिटी में यूज करूंगा, उतना ज्यादा मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, उतना ज्यादा मुझे डिफरेंट यूनिट्स यूज करना पड़ेगा। अगर मैं आपको एक और नॉर्मल यूनिट में दे दूं, फॉर एग्जांपल लाइक एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, अगर मैं स्पीड प्रेशर अगर मैं दूं, सपोज करो अगर मैं प्रेशर मेजर करने के लिए बोलूं, तो प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया एंड दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो अगर यहां पे भी प्रेशर का भी अगर यूनिट आपको पूछूं, तो दैट वुड बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब हर एक डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंट यूनिट्स है। अब आप ऐसा तो नहीं करोगे ना कि अगर आप हर बार आप चीजों को मेजर करो और हर मेजरमेंट के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स यूज करो, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सोसाइटी ने क्या किया, सोसाइटी ने मिलके एक बेसिक यूनिट डिसाइड किया, बेसिक यूनिट बनाया, और वो बेसिक यूनिट कौन है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स। अब ये बेसिक यूनिट ऐसे हैं जो बाद में डिवाइड नहीं हो सकते, दे विल नॉट बी एबल टू रिजॉल्व फर्दर, right? They remain as it is, and from that unit you can able to produce another units. So basically fundamental units are nothing but it is a basic unit. It's a basic unit which cannot be resolved, which cannot be resolved. Okay, तो कौन से बेसिक यूनिट है, तो बेसिकली 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। सो पहले तो मैंने बताया था आपको लेंथ इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल यूनिट एंड द यूनिट इज मीटर, देन टाइम यूनिट इज सेकेंड, देन मास यूनिट इज किलोग्राम, उसके बाद टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है बेटा, केल्विन, उसके बाद ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है। तो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का क्या यूनिट होता है, दैट विल बी कैंडेला। देन देयर इज अ मोल का क्या यूनिट होता है, अगेन मोल ही होगा, मोल मींस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। और एक बचा करंट का क्या यूनिट होता है, एम्पियर। सो बेसिकली दिस आर द 7 फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, एंड दिस आर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। So we have the 7 this physical quantity associated with their 7 fundamental units. Now these are the units which cannot be further divided, and that's why we had stated that these 7 units are fundamental units. These are fundamental units. Now we are going to discuss another unit that is called derived unit. What is the meaning of derived unit, beta? Derived unit are the unit which will be obtained by the help of fundamental unit. Now the next topic is derived unit. Derived unit is a unit, it's a unit which obtained by the help of basic units or fundamental unit. अभी जैसे मैंने एग्जांपल बहुत सारे दिए थे, फॉर एग्जांपल लाइक प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन बाय एरिया, विच इज मास कितना होता है बेटा, किलोग्राम, एक्सेलरेशन कितना होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एरिया कितना होता है, मीटर स्क्वायर। सो बेसिकली यहां पे क्या होगा, दिस विल बी मीटर स्क्वायर में मीटर कैंसिल हो गया, तो किलोग्राम बाय मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। सो प्रेशर का यूनिट ये हुआ, समझ आ रहा है बेटा। So basically kilogram is a fundamental unit, meter is a fundamental unit, and second is also a fundamental unit. So by the combination of all the fundamental unit, we have obtained the unit what we call derived unit. So this is called derived unit. है ना बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं what will be the unit of speed, तो अभी मैंने बताया था speed is distance upon time, ठीक है, distance is meter, time is second. Again we have used the 2 fundamental units, meter and second. Now the unit which you have obtained by the combination of fundamental unit is nothing but derived unit. Now again I have another physical quantity. आप
wherever and whichever unit if you consider, for example like अब acceleration भी लोगे, acceleration is meter per second square, ठीक है. Force लोगे, force is a mass into acceleration, ठीक है. And there are there are many physical quantity you can consider, and you will find that they are the combination of this basic units. I hope इतना समझ में आया होगा बेटा. जनरल क्वेश्चंस देखो बेटा, अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि सपोज करो एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे. तो यूनिट्स फॉर एग्जांपल लाइक अगर मुझे पता है कि किलोग्राम है, तो किलोग्राम को मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है. या फिर एक जनरल जो यूनिट का जो डेफिनेशन होगा, सो यूनिट इज जनरली एसोसिएटेड विद अ न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड अलोंग विद अ न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी मैग्नीट्यूड होगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होगा दैट इज एसोसिएटेड विद न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स यूनिट, ठीक है. अगर मैं बोलूं लेंथ, सपोज करो कोई बॉडी का लेंथ है 2 मीटर, तो न्यूमेरिकल वैल्यू एंड मीटर are two factor which has a meaning, which state the meaning that the 1 meter is repeated 2 times. अगर मैं यहां पे ये लिखूं कि 10 किलोग्राम कोई फिजिकल क्वांटिटी को मैंने मेजर किया और उसका वेट कितना आया 10 किलोग्राम, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ that 1 किलोग्राम is repeated 10 times. अगर मैं यहां पे लिखूं सपोज करो 10 सेकेंड, तो इसका मतलब क्या हुआ 1 सेकेंड इज रिपीटेड 10 टाइम्स. सो दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड. क्लियर. तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि फॉर एग्जांपल लाइक वेट में कभी आपने 1 टन लिखा है, 1 टन मतलब 1000 केजी है, तो 1000 केजी का इंटरप्रिटेशन क्या होगा बेटा, दैट मींस 1 किलोग्राम इज रिपीटेड 1000 टाइम्स, ठीक है. अगर मैंने ये लिखा 1000 मीटर है ना, तो 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट 1 मीटर इज रिपीटेड 1000 टाइम्स, देन इट बिकम्स 1 किलोमीटर. सो दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है. सो फिजिकल क्वांटिटी इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्मेट, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू विद इट्स यूनिट, है ना. अभी मैं आपको बता रहा था कि जनरली इफ आई वांटेड टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू द अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, तो वो कैसे करेंगे. तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा सिस्टम ऑफ यूनिट है क्या. तो सिस्टम ऑफ यूनिट में बेसिकली देयर आर 3 कैटेगरीज, दे आर डिवाइडेड. फर्स्ट इज योर CGS यूनिट, अनदर इज योर MKS यूनिट, एंड द थर्ड वन इज SI यूनिट, ठीक है. CGS यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड अ गॉसियन यूनिट. यहां पे इसमें क्या था कि सोसाइटीज इनिशियली यूज्ड टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड. नाउ इन द केस ऑफ MKS, द सोसाइटी यूज्ड टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड. नाउ इन थर्ड केस द सिस्टम सोसाइटी यूज्ड टू मेजर, देखो बाद में ये MKS यूनिट में ऐसा हुआ था कि लेटर ऑन दिस करंट इज ऑल्सो लाइक गिवन, current is also associated with the part of fundamental quantity. So later on this MKS is considered as a MKSA system, which means meter, kilogram, second and ampere. बाद में SI यूनिट में क्या होगा, SI यूनिट मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या होगा बेटा, अभी इसकी जरूरत क्यों पड़ी SI यूनिट में. SI यूनिट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर मुझे एक, यहां पे मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज करो मुझे एनर्जी मेजर करनी है, ठीक है. एक जगह मुझे हीट मेजर करना है, एक जगह मुझे लेट्स से
कमर्शियल एनर्जी मुझे यूज करनी है कि भाई हाउ मच एनर्जी कंज्यूम्ड, कमर्शियल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हीट के लिए यूनिट यूज करते थे जूल, एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूज करते क्या यूज करते बेटा, वॉट आवर। So basically these are the units basically used in a case of MKS unit. However, SI unit has reduced this confusion. SI unit ने क्या बोला कि नहीं, अब कोई भी एनर्जी का यूनिट लेके चलो, कोई भी एनर्जी मेजर करो, all the energies terms will be measured in only one unit and that is joule. अब ये सिर्फ इसमें नहीं है, बाकी सारे बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स फिजिकल क्वांटिटीज हैं जहां पे इस तरीके के कंफ्यूजन एमकेएस में आते थे, तो वो सारे कंफ्यूजन को एलिमिनेट करने के लिए क्या हुआ बेटा, एसआई यूनिट को डेवलप किया। अब एसआई यूनिट बेसिकली सेम है, लाइक जनरली सोसाइटी यूनानिमसली डिसाइडेड दैट देयर विल बी 7 बेसिक यूनिट्स, जो मैंने आपको पहले ही मैंने बता दिया। दिस यूनिट्स वर डिफाइंड सो दैट देयर विल नो कंफ्यूजन बिटवीन any countries, because basically ब्रिटिश में FPS सिस्टम चलता है, ठीक है। FPS मैंने लिखा नहीं है, there is another system that is called FPS। FPS में क्या होता है, फुट पाउंड सेकंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। FPS एक और यूनिट है, there is another unit, let me write it here, first and there is another unit, let's say, let me write it here, third FPS unit। FPS unit में क्या होता है, फुट pound second. This unit is adopted British. Britishers are generally use this FPS unit, but however whichever country you are going, they have their own system of unit. But अगर मान लो कि कोई इंडियन बंदा अगर ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड में जाता है, तो अगर उसको यही आइडिया नहीं पता कि फुट मतलब कितना होता है, पाउंड मतलब कितना होता है, सेकंड तो खैर यूजुअली नॉर्मल है, बट ये दो कन्वेंशन अगर फुट और पाउंड का रिलेशन अगर नहीं पता होगा तो इट विल क्रिएट अ हैवोक, है ना, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अगर मान लो यही पर्सन अगर कोई और जगह पे चला जाता है जहां पे कोई डिफरेंट तरीके का मेजर यूज किया जाता है, मेजरमेंट यूज किया जाता है कोई दूसरे कंट्री में, तो डेफिनेटली इन ऑर्डर टू कमिंग आउट फ्रॉम दैट कंफ्यूजन, society unanimously have decided a one single system of unit which will be accepted internationally, and those units are fundamental units, जो मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। तो वो एक ऐसी यूनिट्स है कि आप कोई भी दुनिया का कोई भी जगह पे जाओगे, अगर वहां पे आप बोलोगे कि अगर मुझे 1 मीटर का कपड़ा चाहिए तो यू विल गेट अ कपड़ा ऑफ 1 मीटर। अगर आप बोलोगे कि हाँ आपको 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस चाहिए तो यू विल अंडरस्टैंड 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड दे विल गिव यू द दैट अमाउंट ऑफ बॉडी, ठीक है। सो बेसिकली वहां पे आपको फुट पाउंड का यूज नहीं करना पड़ेगा, वहां पे जनरली अगर आप ये नॉर्मल यूनिट्स को भी आप एज अ रेफरेंस यूज करोगे तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड कम्युनिटी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस थिंग इज कंस्ट्रक्टेड, द सिस्टम ऑफ यूनिट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। और फंडामेंटल यूनिट्स के बाद एक और यूनिट है दैट इज कॉल्ड लाइक सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स में क्या होता है बेटा, सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आपको पता चलेगा कि सप्लीमेंट्री यूनिट इज आल्सो कॉल्ड एडिशनल यूनिट्स। देयर आर 2 यूनिट्स, दैट इज फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल एंड द अनदर वन इज सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल मतलब क्या होता है, बेसिकली प्लेन एंगल इज हैविंग द यूनिट कॉल्ड रेडियन, एंड हियर सॉलिड एंगल हैज अ यूनिट कॉल्ड स्टीरेडियन, ठीक है। प्लेन एंगल 2D बॉडी को मेजर करने के लिए काम आता है और सॉलिड एंगल 3D बॉडी को मेजर करने के लिए काम आता है। फॉर एग्जांपल एक पिज्जा का शेप अगर आपको याद होगा, द शेप ऑफ पिज्जा इज अ 2D। अगर मान लो कि अगर मुझे सपोज करो दिस इज योर आर्क रेडियस एंड दिस इज योर आर्क लेंथ, सो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, वेयर दिस थीटा इज इन रेडियन। रेडियन क्या होता है बेटा, अभी मैं समझा दे रहा हूं रेडियन मतलब कितना होता है, बट एज ऑफ नाउ आपको ये रिलेशन याद रखना है, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस एंड दिस इज द रिलेशन फॉर प्लेन एंगल। हाउएवर फॉर द सॉलिड एंगल मतलब अगर बॉडी, अगर मान लो कि आपका एक स्फीयर है और स्फीयर में आपको अगर मैं पूछूं कि इसको थोड़ा इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड टू कंस्ट्रक्ट दैट डायग्राम हियर, बट अगर सपोज करो मैं एक वाटरमेलन है, वाटरमेलन का एक सॉलिड कोन अगर बाहर निकालते हो तो इट विल बी लुक लाइक दिस, राइट। आई होप बन जाए, या सो दिस इज द शेप,
So this angle is your steradian, which is represented by ohm, and this is your area, and let's say the radius is r. This is your radius r. So steradian is represented by area upon radius का square. ठीक है? So these are the basic formula for measuring the plane angle and steradian. Clear? Now this part is really this is important part that many of the students don't know the relation between radian. So I'm going to explain this part. ठीक है? तो अगर मैं एक सर्कल कंसिडर करके चलूं, ठीक है, इफ आई हैव दिस सर्कल, और सर्कल का अगर मैं आपसे पूछूं दैट इफ दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट, लेट्स से दिस इज योर यूनिट सर्कल, मींस लेंथ इज 1 मीटर, लेट्स से, और आपने यहां से डिस्टेंस करना स्टार्ट किया, यू स्टार्टेड योर जर्नी एंड रिटर्न बैक टू द सेम पोजीशन. सो इफ आई आस्क यू हाउ मच डिग्री you have covered, so this total degree is 360 degree. पूरा circumference rotate करने के लिए the angular distance that you have covered, and that is 360 degree. Clear? So this 360 degree is equal to the length of the circumference, and that is 2 pi r. And here I have taken r is equal to 1 unit. So if I write 360 degree is equal to 2 pi into 1 unit, so this 2 pi is equal to 360 degree. So pi is equal to 360 divided by 2, and that is equal to 180 degree. Now this is the relation between radian and degree. That means if I ask you, now this is your pi is in radian, this is in radian, and this is in degree, if I'm not wrong. So if I ask you 1 radian is equal to how many degree? So if pi radian is equal to 180 degree, so 1 radian is equal to x. So if you take the relation of so x is equal to 180 degree divided by pi into 1 radian. So obviously this radian and radian will be cancelled, and 180 by pi की वैल्यू क्या रखना है? 3.14 या फिर 22/7. तो 1 radian, so 1 degree is equal to 57.29 radian. If I'm not wrong, this 1 radian is equal to 57.29 radian. ठीक है? So you can put this value 180 degree divided by 3.14, and that will be 57.32. It is not 57. So this value is 57 point. So वो डिग्री कर लेना. So अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करते हो, so yeah, so this 1 degree is equal to 57.32 radian. ये आपको याद रखना, ठीक है. और अगर आप इतना भी याद रखते हो ना, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट विल बी आल्सो वर्क गुड्स, है ना. सो दिस थिंग यू शुड रिमेंबर. और सेम थिंग हैपेंस फॉर द सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल में क्या होता है बेटा? सॉलिड एंगल में आपको आई होप ये चीजें क्लियर दिख रही होगी. लेट मी सी, सबसे तो दिख रहा ना. यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे पाई की वैल्यू बता दे रहा हूं. द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 और 3.14. यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर, तो आपको डायरेक्टली आंसर आ जाएगा. अबाउट द steradian, तो वन स्फीयर, नाउ कंसीडरिंग दैट द रेडियस, अगर ये स्फीयर की बात कर रहे हो, अगर स्फीयर 3D में होता, याद रखना, सो 3D में ये एंगल क्या होगा? ओम, ठीक है, steradian. तो स्फीयर का जो वैल्यू होती है, कंसीडरिंग द वैल्यू ऑफ r इज 1 मीटर, तो दैट विल बी 4 pi r स्क्वायर. एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4 pi r स्क्वायर. अगर वैल्यू रखते हो तो एक स्फीयर का जो एंगल होगा सेंटर पे, दैट इज इक्वल टू 4 pi steradian. ठीक है. So one sphere has at the center, it makes an angle of 4 pi steradian, and in the case of
circle, in the case of circle, it makes an angle of 2 pi radian. So radian and steradian, I hope it is clear, because radian is a unit which is used for measuring a 2D body, steradian is a unit which is used for measuring a 3D body. Clear? अभी मैंने सारा लेक्चर ऑलमोस्ट मैंने एक्यूरेसी और प्रिसिजन खत्म कर दिया था, and then all of the sudden I came to realize that my video camera off. So I had almost covered up to significant figure, और इतना सारा कवर करने के बाद जब मुझे पता चला कि कैमरा ऑन ही नहीं है, it was like it was really amazing moment. Anyways, let's restart for the accuracy and precision. Accuracy and precision. So how would we define accuracy and precision? As I told in the previous lecture, in this lecture we had discussed that accuracy, if I give you two values, let's say 1.25 meter, let's say ये आपकी ट्रू वैल्यू है, ठीक है बेटा. ट्रू वैल्यू मतलब मैंने क्या बोला कि जो बॉडी की यहाँ पे मैंने क्या दिया, मीटर दिया. तो सपोज करो एक्चुअल मेजरमेंट जो है वो बॉडी का वो कितना है बेटा, 2.54 मीटर, और आपने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज किया, और उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के बाद आपने उसके कुछ ऑब्जर्व वैल्यू डिटरमाइन किया. ठीक है बेटा, एक बार मैं वापस कैमरा चेक कर लेता हूं. एवरीथिंग इज गुड. या सो ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है बेटा, लेट्स से 1.24 मीटर, 1.23 मीटर एंड लेट्स से 1.22 मीटर. ये तीन मेरी एक वैल्यूज मैंने ऑब्टेन्ड की आफ्टर द मेजरमेंट ऑफ विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस, राइट. Now if I ask you that whether these values are close enough to the true value, so answer is yes, these values are close enough to the each values to the true value. So I can state that since these values are more closer to the true value, they are more accurate, right. More accurate means if observed value is closer to true value. ठीक है बेटा. Now if I ask you, is this values are closer to each other? So the answer is yes, these values are closer to each other. Then we can say that they are more precise. Precision मतलब क्या होता है बेटा कि however the reading you are taking with the help of the measuring instrument, if those observed value are turn out to be almost closer to each other. यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे मेरे तीन रीडिंग्स है और तीनों के तीनों रीडिंग एक दूसरे के क्लोज है. So I will say that this observed value are precise. Not only precise, they are more precise. However, let's say I have another reading. Again, I have the same reading 1.25 meter, and my observed value, let's say 1.2 meter. Let's say this is your 1.0 meter. Let's say this is not a 1.0. Let's say 0.7 meter. This is your 0.2 meter. These are my three observed values. Now, if I ask you whether these values are closer to the true value, this is the true value. Is this value are closer to the true value? So answer is no. No, they are not closer to the true value. Then we can say that in this condition, I have a less accuracy. And is these values are closer to each other? Again, the answer is no. So they are less precise. ठीक है बेटा. प्रिसीजन का एक और पैरामीटर होता है. क्या होता है कि अगर आपके पास तीन रीडिंग है, लेट्स से 1.0 मीटर, 1.00 मीटर एंड 1.000 मीटर. अब ये तीनों रीडिंग्स में विच रीडिंग विल हैव अ मोर प्रिसाइज वैल्यू. सो प्रिसीजन इज समथिंग हैज टू डील विद द मोर नंबर ऑफ रिजॉल्व्ड वैल्यूज. मतलब एक ऐसी वैल्यू जो आपको पर्टिकुलर बॉडी विच हैज बीन मेजर्ड उसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल दे सके. तो आउट ऑफ दिस थ्री वैल्यूज द लास्ट वन विल हैव अ मोर रिजॉल्व एज कंपेयर टू द लास्ट टू वैल्यूज. बिकॉज अगर यहां पे पहली वैल्यू की बात करोगे तो इट विल गिव यू ओनली द आइडिया अबाउट द फर्स्ट डेसिमल वैल्यू. हाउएवर द सेकंड वन विल गिव यू द आइडिया ऑफ द टू डेसिमल वैल्यू एंड द लास्ट वन कैन गिव यू द आइडिया अप टू थ्री डेसिमल वैल्यूज. That means out of this three, we have a last one which can give you the more data, more ideas about the particular measurement. And that's why we can say that the last one, whichever reading you are obtaining, whichever like measurement you are taking in, out of the measurement,
with the help of the instrument, whichever will be giving you a more resolved value, that will be more precise. Resolved value मतलब क्या होता है बेटा? डेसिमल वैल्यू के बाद, ये जो डेसिमल पॉइंट्स है उसके बाद किसके पास ज्यादा डेसिमल वैल्यूज है. इफ यू हैव मोर डेसिमल वैल्यूज आफ्टर डेसिमल पॉइंट, दैट मींस दैट वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू इज मोर प्रिसाइज. आई होप ये क्लियर हो गया बेटा. अब इसके बाद मुझे क्या समझाना है? इसके बाद हमें ये समझना है कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूं ताकि ये आपको हमेशा याद रहेगा. ये दैट इज कॉल्ड डार्ट थ्रो मेथड. डार्ट थ्रो में क्या होता है बेटा कि अगर सपोज करो आपके पास एक बोर्ड है, यहाँ पे एक डार्ट बोर्ड लगा दिया है मैंने, ठीक है, और ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपका पॉइंट है जहां पे सारे डार्ट्स को आपको हिट करना है. सपोज आपको मैंने 3 चांस दिए, तीनों चांस में 1, 2 और 3 रीडिंग्स आपके यहाँ पे आए. हिट आपने क्या किया? डार्ट लिया, डार्ट बोर्ड पे हिट किया और आपके ये 3 रीडिंग्स यहाँ पे तीनों पोजीशन पे आपके डार्ट गिरे. नाउ अब इसको हम लोग क्या करेंगे? एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की टर्म में समझते हैं. लेट्स से दिस सेंटर वैल्यू इज योर ट्रू वैल्यू, राइट, एंड द अदर वैल्यू व्हिच वेरेवर it has hitted, that value is your observed value, है ना बेटा? तो if I ask you that is this value is closer to the true value, let me give you the data. The center value, let's say 2.54 meter, and this values, let's say this is your 1.52, 1.51, and this is 1.50. So if I ask you is this value is closer to the true value, so answer is no, they are not closer to each other. So in this case I will say they are less accurate. But again if I ask you is this values are closer to each other, मतलब कि अभी ऐसे देखा जाए तो ये क्लोज तो नहीं है, तो चलो इसको एक रैंडमली वैल्यू में दे देता हूं 0.7 and let's say 0.3. So again these values are not close to each other, so I will say they are less precise. अब एक और कंडीशन दे रहा हूं बेटा, जहां पे क्या हो रहा है बेटा, अगेन आई हैव अ डार्ट बोर्ड, बट इन दिस केस let's say these are my locations. This is your nucleus and these 3 darts are closer to your true value. यहाँ पे आपकी true values हैं and these 3 positions are your observed value. ठीक है? Observed value. So now if I ask you, since these 3 darts are closer to each other, that means you will straightforwardly say that yes, these are more precise. And the second question is, these 3 darts are closer to true value? Answer is yes. Then you can estimate that this is more accurate also. So you can say that they are more accurate and more precise. Accuracy is something deal with the closeness of observed value with the truth value, and precision is something which deals with the closeness of observed value. अब I hope ये clear हो गया होगा इसमें, इन दोनों में difference क्या है, right? Now the next part that we are going to discuss, this is the last part, and that is significant figure, right? So let's discuss the significant figure. Significant figure किसे बोलते हैं बच्चा? Significant figure किसे बोलते हैं? Let me see, अब तो सब सही चल रहा, हाँ ठीक है. Significant figure. Significant figure. Significant figure means अगर आपने कोई भी एंटिटी को मेजर किया, ठीक है, कोई भी स्पेसिमेन आपको दिया, and if I ask you to measure that specimen, so whatever the value you are obtaining out of measurement, that is your important digits. So those important digits are called significant digits or significant figure. Now there are certain rules that we need to understand. So let's understand rules one by one. First rule says that all the non-zero digits will be significant. So अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2, 1, 2, 3, so since all are non-zeros, so we have how many significant figures? We have 4. I will represent significant figure as SF, तो confusion नहीं होगा, ठीक है बेटा? And if I ask you this, the statement is all non-zero digits are significant figure. Now the second key is all zeros present between the non-zeros will be significant. So अगर मैंने 2, 1, 0, 0, 2 लिखा, तो इसमें क्या होगा बेटा? There are 1, 2, 3, 4, 5 significant figure, right? So in this case, all zeros between non-zero are significant. ठीक है बेटा? अभी एक और चीज मैं आपको बता दे रहा हूं बेटा कि इफ यू आर ऑब्जर्विंग दिस लेक्चर, है ना, तो साथ में पेन पेपर साथ में रखिएगा, और अगर साथ में रख रहे हो तो कीप अ नोट ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल
for revise during the end moment, याद रखना. And third part, what will be the third reason? I mean third rule. Third rule क्या बेटा? Third rule says that कि if there is a zero after a decimal value, provided before a decimal there are non-zero digits. So if I ask you, a zero after a decimal are considered as a significant. There are how many significant figure are? SF is equal to 3. So 0 after a decimal are significant. And now the question fourth one, 0 after a non-zero digits but before a decimal value are considered as a significant. इस वाले केस में क्या होगा? SF is equal to 4. बट डेसिमल के बाद ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा. ठीक है, दिस इज द रूल यू हैव टू रिमेंबर. सो इन दिस केस ऑल जीरो आफ्टर नॉन जीरो but before decimal is significant, and after a decimal whatever the zeros you have they won't be considered as a significant. तो हमारे केस में कितना होगा बेटा? This will be, I have 4 significant figure, है ना. एक और चीज है, all zeros after a non-zero are considered as a non-significant. अभी ये थोड़ा कंफ्यूजन होगा बट अभी बता दे रहा हूं, कंफ्यूजन क्लियर होगा. अगर मैंने लिखा 2100, सो आई हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर. यानी क्या रूल क्या है? ऑल जीरोस आफ्टर अ डेसिमल विल बी सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट. यहां पे क्या होता है? ऑल जीरोस आफ्टर अ नॉन जीरो इज सिग्निफिकेंट बट कंडीशन इज दैट जीरो मस्ट बी बिफोर अ डेसिमल, है ना. यहां पे कोई डेसिमल वैल्यू नहीं है तो ये क्या हो गया? दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. अब एक दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि इसी क्वेश्चन में बच्चों को बहुत डाउट होता है. क्वेश्चन क्या होगा कि अगर मैंने यही रीडिंग को मैंने मेजर करने के बाद निकाला, सपोज करो मैंने वेट निकाला किसी का और वेट आया 2100 ग्राम, है ना बेटा. अगर मेरा इस तरीके से एनी वैल्यूज दैट यू आर ऑब्टेनिंग आफ्टर अ मेजरमेंट, देन each digits will be counted as a significant. Remember it. So now in this case I have how many significant figure? I have 4 significant figure. Irrespective of this one, this is a direct value and this is a measured value. So in the measured value all values are considered as a significant figure. इसमें बहुत confusion होता है, याद रखना. And the last one, zeros हो गया ना, और कौन सा बचा? So yeah, these are the rules for the significant figures. Remember? इसको सारी चीजों को याद कर लेना. हाँ, एक और रूल बचा हुआ है. कौन सा रूल बचा? कि if I write 0.023, so all the zeros before a non-zero or after a decimal will be non-significant. So in this case I have how many significant figure beta? I have 2 significant figure. ठीक है? So I have a 2 significant figure. So in this case all zeros after a decimal and before non-zero digit are not significant. ठीक है, तो these are the rules. ये 6 रूल आपको याद रखना है सिग्निफिकेंट फिगर के. अगर ये याद रहेगा तो you will not face any confusion, है ना बेटा. अब सिग्निफिकेंट फिगर अगर आपने समझ लिया, so there is another rule that is specially for addition and subtraction. Addition and subtraction. Addition और subtraction में क्या होता है कि if you are adding or subtracting a 2 digits, right? Any 2 measured values or any direct readings. So if you are adding, let's say अगर हमारे पास 2 वैल्यू है 1.2 और let's say 1.24. So whatever the final reading you are obtaining, in my case I am obtaining 1.44. ठीक है. So the final reading must consist of least number of significant figure after a decimal. मतलब अगर यहाँ पे ये 2 वैल्यूज है मेरे पास, तो इन 2 वैल्यू में पहले वाला जो वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू, consist of 1 significant figure after decimal.
The second value is consist of two significant figure after a decimal. So which means out of this, the least carrying significant figure after a decimal will be considered after you are getting the final result. तो इस केस में क्या करना पड़ेगा बेटा? You have to resolve into two significant figure. So this must be the answer for this case will be 1.4. ठीक है बेटा? अभी मैं राउंडिंग ऑफ रूल में आपको समझा दे रहा हूं, तो इसमें बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा. ठीक है? This carries a least number of significant figure after decimal. ठीक है? This is the rule. During the addition subtraction, it must carry the least number of significant figure after a decimal. This is the rule you have to adopt during the case of your final result. Now the last, the another part, that is addition and multiplication and division. For the multiplication and division, you have to remember that whatever the result you are obtaining, it must consist of least number of total significant figure. So for a multiplication and division, so if I have a 1.2 multiplied by 1.23, what will be the result? If I calculate this value, 1.2 multiplied by 1.23, so the result is 1.478. 1.478. So it must, whatever the result you are obtaining, इसमें क्या करना बेटा? So final result must consist of least number of significant figure out of, किसमें से पता चलेगा? अभी देखो यहां पे अगर मैं बात करूं तो it has how many significant figure? It has a 2 significant figure. Here I have how many significant figure? It has a 3 significant figure. तो इसमें जिसका भी significant figure कम होगा वही रिजल्ट आपको क्या करना है? फाइनल रिजल्ट में रखना है. तो यहां पे क्या होगा बेटा? It is 1.4, it is 1.5. ठीक है बेटा? अभी आपको क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि सर आपने 1.4 और ये 1.5 कैसे लिखा, तो वो चीज अभी मैं समझा रहा हूं बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ राउंडिंग ऑफ रूल. नाउ द न्यू टॉपिक इज राउंड ऑफ रूल. ठीक है, ये मैं डायरेक्ट आपको समझा रहा हूं. दिस इज द लास्ट पार्ट एंड देन वी विल वाइंड अप. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे बेटा? एरर एनालिसिस हम लोग डिस्कस करेंगे. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. एरर में बहुत कंफ्यूजन होगा. एरर से पहले मुझे आई वांटेड टू डिस्कस सम लॉगरिथम पार्ट. लॉगरिथम पार्ट भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ठीक है. सो राउंड ऑफ रूल में पहला रूल क्या है बेटा? सपोज आई वांटेड टू राउंड ऑफ दिस फिगर 1.254. इसको मुझे क्या करना है कि आई हैव टू राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर. तो उसको कैसे करेंगे बेटा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इन ऑर्डर टू मेक 3 सिग्निफिकेंट फिगर, whichever value you are dropping off. In my case, I am dropping 4. तो अब ये 4 value, is this value is less than 5? Answer is yes. Then you can straightforwardly, you can write the answer 1.25. So the previous value, preceding value remain unchanged. मतलब अगर आपका जो लास्ट वैल्यू जो आप ड्रॉप कर रहे हो उससे preceding value means 5 के कंपेयर में अगर वो वैल्यूज छोटी है तो वो इजीली आप उसको एलिमिनेट कर दो. So whatever the value you are obtaining, this will be the answer. उसको आप आराम से हटा सकते हो, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है. अगर इसका सेकंड केस अगर मैं लिखूं 1.256. नाउ इन दिस केस अगेन आई हैव टू कन्वर्ट इनटू अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर. कैसे करेंगे बेटा? तो अभी इस टाइम पे मुझे 6 को ड्रॉप करना है ना? तो 6 is more than 5. So in this case, if the value which you are dropping is more than 5, then or more than the previous digit, then your previous digit will be raised by 1. So it will be 1.26. So this is your 3 significant figure. This is your 3 significant figure. I hope ये समझ आ रहा है बेटा, है ना? अभी यहां पे इस केस में क्या था बेटा? 4 which is less than 5. So it will remain as it is. The 5 will not be affected. However, in the second case, the value of 6 is more than the previous value, or whichever value you are dropping off, if it is more than the previous value, then that previous value will be raised by 1. Okay? So this is the second rule. Now we are talking about the third rule. What is the third rule? Let's say the value that you wanted to drop is 5. चलो 1.255 मैंने लिखा है ना? अब देखो इसमें आपको क्या देखना है कि if I have this values 1.2550 and again I have to convert into 3 significant, up to 3 significant figure I have to convert. सेम क्वेश्चन है. इसमें क्या करेंगे बेटा? इसमें आपको देखना है कि the value which you are dropping
In my case, I am dropping 5. If 5 is followed by 0, ध्यान से सुनना, ठीक है बेटा? अगर if 5 is followed by 0 and the previous value is 5, which is odd number. एक बार मैं वापस बोल रहा हूं. The value which you are dropping is 5, which is followed by 0, and the previous value is 5, then that, which is obviously odd number. So if previous value is odd number, so that value is raised by 1. So in this case, it will be dropped to 2 or it will be converted to 1.26. ठीक है? Now if let's say 1.2650, अब ऐसा है. Again, the value you have to convert to the 3 significant figure. You have to convert to 3 significant figure. Now in this case, you have to drop 5 followed by 0, but previous value is 6, which is even number. So if it is even number, the value remained unchanged. So your answer is 1.26. क्लियर? तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? डिफरेंस यही है कि जो वैल्यूज आप ड्रॉप कर रहे हो, अगर वो 5 है, एग्जैक्टली 5 है, और उसके बाद जीरोस हैं, सपोज करो 0 के पास कोई वैल्यू नहीं है, तो 0 के बाद अगर 0 होगा या फिर किसी में कोई वैल्यू भी नहीं होगा, तो प्रीवियस वैल्यू देखो कि whether it is odd or even. If you find odd number, then you have to increase that value by 1, and if it is even number, you have to keep it as it is. Clear? और एक लास्ट रूल है क्या बेटा कि if ओके, इसमें मैंने क्या लिखा था बेटा? It is 3 significant figure, right? ये आप लोग नोट डाउन भी करते रहना. This is up to 3 significant figure. Now the last one, if let's say the value which you are dropping off is 5, but it is any non-zero digit. 0 नहीं है, नॉन जीरो डिजिट, मतलब 5 के बाद 0 नहीं है, कोई 1 2 3 4 कोई भी नॉन जीरो डिजिट होगा ना, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? लुक एट द प्रीवियस नंबर, irrespective of odd and even, it will be always raised by 1. तो इसका वैल्यू क्या आएगा बेटा? 1.26. और यहां पे अगर सपोज करो 1.2651 होता तो क्या होता? सेम 1.26. So ये वाले केस में क्या होगा बेटा कि if it is followed here, again I have to, in both cases I have to convert in 3 significant figure. In both cases I wanted to convert into 3 significant figure. However, the value which you are dropping is 5, and this 5 is followed by non-zero digits. So if they are followed by non-zero digits, so the previous number will be raised by 1 irrespective of odd and even number. तो अगर मैं यहां पे इस दोनों की एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात करूं, जो लास्ट एग्जांपल मैंने दिया था, सो एडिशन में मैंने क्या किया था बेटा? 1.2 plus 1.24, so the answer is 1.44. Now since I have to consider the least number of significant figure after a decimal, so out of 2, this one is the least one, correct? So अब मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा? डेसिमल के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर बनाना है. So I have to check whether this, now I have to drop 4. I have to drop 4. So since 4 is equal to 4, so I can simply, without disturbing the previous number, I can simply eliminate. The answer is 1.4. मतलब equal हो या उससे कम हो तो कोई दिक्कत नहीं है. It will be remain as it is. However, in this case, अगर मैं यहां पे 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.23 करूं तो आंसर कितना है बेटा? 1.475. Now I have to convert this answer into least number of significant figure. In my case, least number of significant figure is 2. So I have to drop it into a 2 significant figure, up to a 2 significant figure. So I have to drop here 7. 7 will be dropped. Now the 7 is more than the previous number. Remember second rule? Second rule is if the number which has been dropped is more than the previous number, then it will be raised by 1. So 7 is more than the previous number, so it will be raised by 1. So the answer is 1.5. Clear? So this is how you have to deal with the significant figure. So I hope आपको समझ में आया होगा ये सारी चीजें. आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया बच्चा? Today we have discussed the basic definition of the basic meaning of measurement, physical quantity and units, that why it is essential in physics that it is not only limited with the observed quantity, but it is always associated with the measured quantity. So we had discussed about it, and then we had discussed about the fundamental units, that basically in order to overcome the confusion among the internationally, so especially related to the units, so we have
units, that is called fundamental units, that have been established. And later on, we have also discussed the idea about the derived unit. And the derived unit, we have discussed plane angle and this solid angle. So plane angle क्या होता है बेटा? Plane angle में मैंने बताया था कि it is useful for especially for the 2D object, and solid angle is useful for a 3D object. And later we had discussed the difference between accuracy and precision. जिसमें accuracy में मैंने क्या बताया? Accuracy में मैंने ये समझाया that your observed value must be closer to the true value. However, precision is not that the case. Precision is something which is deal with the closeness of the observed value. If the observed value are close to each other, that means that value is more precise. However, precision is also depends on the another factor, and that is resolution of the measurement. So मैंने एक example मैंने दिया होगा 1.0, 1.00, 1.00. उसमें मैंने आपको समझाया था कि 1.000 is considered as a more precise value. Why? Because it gives us more data about the measurement as compared to the previous one. And finally, we had discussed about the ideas about the significant figure, the rules of the significant figure we had discussed, and later we had discussed the idea about rounding of the figure. तो आई होप इतना सब आपको समझ में आ चुका होगा. और बाद में इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर एरर एनालिसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इस चैप्टर का वेटेज इसमें बहुत ज्यादा होता है. ये तो जनरली बेसिक आइडिया था. जो इसका जो इस टॉपिक का जो इंपॉर्टेंट वेटेज जो होता है ये सिग्निफिकेंट फिगर वाला ही होता है. और एक्यूरेसी प्रिसीजन में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं. तो आई होप वो एक्यूरेसी प्रिसीजन को अगर आपको अभी भी समझ में ना आया होगा तो उस चीजों को रिपीट कीजिएगा. वीडियो को पॉज कर लीजिए, पीछे जाके रिवाइज कर लीजिए, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू रिवाइज ऑल दोस थिंग्स. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ एरर एनालिसिस, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि एरर की जरूरत क्यों पड़ती है. कोई भी मेजरमेंट लेते हो तो एरर उसमें होता ही है. तो हाउ कैन वी एस्टिमेट एरर? एंड बिफोर दैट आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू अ स्मॉल कंसेप्ट ऑफ लॉगरिथम, बिकॉज वो एरर का पार्ट समझने के लिए लॉग का आइडिया होना बहुत जरूरी है. लॉग मतलब उतना डिटेल में भी नहीं, मतलब जितना रिक्वायरमेंट है ना उस हिसाब से मैं आपको समझा दूंगा. ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच. और वीडियोस को रिवाइज करो, अच्छी तरीके से पढ़ाई करो. और वीडियो का आई होप जब मैं पढ़ा रहा हूं तो साथ में आपके पास पेन पेपर होगा ही होगा. अगर नहीं होगा तो विच मीन्स आपने टाइम वेस्ट किया हुआ है. प्लीज इस वीडियो को सीरियसली लो और पेन पेपर के साथ आराम से पढ़ाई करो. और वैसे भी वीडियो पॉज करके प्ले तो कर ही सकते हो, तो उसमें बड़ी बात तो है नहीं, है ना. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय. एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.